Hello students, this is your Shashank sir and this is the solution for ARC Learning Revision Test Day 25 and there are two parts here, microbes in animal welfare and ecosystem, both having 45 questions each. So starting with question number 1, study the correct statement and given below and select the correct one. Okay, microbes are present everywhere on earth. This is a correct statement. This is a correct statement. Present everywhere. They cannot live in thermal vents. This is wrong, right? 100 डिग्री से थर्मल वेंट्स में बैक्टीरिया आपको मिलेगा, थर्मोफाइल बैक्टीरियास मिलेंगे, ठीक है, राइट. दे कैन लिव, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, करेक्ट. ओके, next, protozoa, bacteria, fungi, they can all be cultured in nutrient medium and form visible colonies. See, this is partially correct, right? Protozoa, they require specific mediums, and since it is not mentioned in our book, we will consider this as a wrong statement. तो यहाँ पे हम लोग correct इसको पकड़ेंगे, option number 2, only A. Correct. Okay, coming to the next question, which of the following statements and mark the wrong statement? Dough which is used to make food like idli and dosa is fermented by yeast. Idli and dosa ये कहाँ से ferment होता है? With the help of bacteria. So this is wrong. First one is wrong. Dough which is used to make bread is fermented by yeast. This is correct. Toddy is a traditional drink obtained from fermenting sap of palm tree. This is correct. In making cheese, both bacteria and fungus have some role. Yes. So बैक्टीरिया और फंजाई यूज करोगे तो टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट सब अलग अलग होगा. समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है. सो इनकरेक्ट क्या है? 2 का 1. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज करेक्ट अबाउट स्विच चीज? टेक्सचर, फ्लेवर ऑफ द टेस्ट ऑफ दिस चीज डेवलप फ्रॉम माइक्रोब. दिस इज करेक्ट. टेक्सचर ऑफ द स्विच इज गिवन बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. Coming to the next question, the puffed up appearance of dosa and idli dough is due to carbon dioxide production by fermenting bacteria. This is correct. Toddy, a traditional drink of southern India, is made by fermenting sap from palms. This is correct. Large holes in Swiss cheese are due to production of large amount of methane. Methane नहीं, carbon dioxide. वो puffiness या फिर bacteria तो carbon dioxide के लिए. So A and B are correct. हो जाएगा option number 3. Coming to the next question, ठीक है. Again, study the following statements and select the correct one. Roquefort cheese is ripened by growing a specific fungi or them. Yes. Penicillium roqueforti. This is correct. Penicillium roqueforti चाहिए होता है, right? The different varieties of cheese are known for their characteristic texture, flavor and taste. This is correct. Saccharomyces cerevisiae is commonly called brewer's. This is also correct. ठीक है. So यहाँ पे correct कौन सा है? This is 4. All of them are correct. 5 का हो जाएगा 4. Okay. Match the following question. Again, lactobacillus turns milks into curd. Saccharomyces cerevisiae is utilized for bread. Propione shermani, this is Swiss cheese. And specific fungi, Penicillium roqueforti, this is Roquefort cheese. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 2. A is 4, B is 3, C is 2, D is 1. Okay, coming to the next question. Okay, again match the following. Statins क्या है? It is statins आपका कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटिंग है ना. It competitively inhibiting enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. ठीक है. Then Swiss cheese, it is Swiss cheese have large holes. Swiss cheese have large holes है कि नहीं है? Swiss cheese have large holes. Then lactic acid bacteria, it improves nutritional quality by increasing vitamin B12. And toddy क्या है? Toddy fermenting sap from palm. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3. Coming to the next question. Which of the following groups of beverages are product of distillation of fermented broth? Distillation of fermented broth क्या है? Whiskey, brandy and rum, right? Whiskey, brandy and distillation of fermented broth. Whereas wine and beer क्या होता है? Non distillated होता है. ठीक है. Which of the following is wrongly matched? Question number 9. Saccharomyces, ethanol, correct है. ठीक है. Aspergillus niger, citric acid, दिस इज करेक्ट है. मोनास्कस परपियस साइक्लोस्पोरिन नहीं. साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम करता है, ठीक है. वेरस मोनास्कस परपियस क्या करता है? स्टैटिन्स प्रोड्यूस करता है, राइट. सो 3 इज रॉन्ग. क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलम बैक्टीरिक एसिड, दिस इज करेक्ट. सो 9 का क्या हो जाएगा? 3. ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन B12, राइट. टॉडी आपका इट इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक. वाइन क्या हो जाएगा? अनडिस्टिलेटेड. एंड आपका ब्रांडी क्या हो जाएगा? डिस्टिल्ड. तो ऑप्शन हो जाएगा 1. ऑप्शन हो जाएगा 1. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द फॉलोइंग. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर correct? Penicillium and the antibiotic prevent the growth of Staphylococcus bacterium. This is correct. Malted silicea fermented by Saccharomyces. This is also correct. Raw material used for fermentation
and method of filtration is different in different alcoholic drinks. This is correct. Distilled होगा तो alcoholic concentration ज़्यादा होगा, undistilled होगा तो alcoholic concentration कम होगा. Fermented broth is produced only from fruit juices. Fruit juices नहीं, malted cereal से भी तो होता है, right? Malted cereal से भी होगा, तो ये वाला गलत है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? How many statements are correct? A, B and C are correct. Okay. Coming to question number 12, read the following statements. And anti is a Latin word meaning against. Anti, against life, right? Against antibiotic किधर से आया? Greek word से आया. It has come from the Greek word. So ये वाला गलत है. ठीक है. Full potential of penicillin antibiotic was done by Ernest and Hartford. This is correct. Fleming, Chen and Florey was awarded Nobel Prize in 1945. This is also correct. ठीक है. Common name of diphtheria is गलघोटू. This is correct. But leprosy is not काली खांसी. काली खांसी क्या है? काली खांसी है whooping cough. काली खांसी है whooping cough. Whereas leprosy क्या है? कुष्ठ रोग. Leprosy क्या है? कुष्ठ रोग. So how many of the statements are correct? Two statements are correct. ठीक है. Okay. Coming to the next question. How many of the statements are correct? Lipases are added to the detergent. They help to remove oily stains. This is correct. Cyclosporine is used as a immunosuppressive agent. This is correct. Monascus papyruses produces statins that produce blood cholesterol level, help lower. This is correct. Trichoderma polycythemia fungal species produce cyclosporine. This is correct. Streptokinase genetically engineered for therapeutic. This is also correct. So all of them are correct. All of them are correct. Okay. Now 14. Question number 14. Leprosy. Leprosy क्या है? Leprosy is कुष्ठ रोग. Leprosy is कुष्ठ रोग. ठीक है. Whooping cough, काली खांसी. डिप्थेरिया क्या है? डिप्थेरिया क्या है? गलघोटू. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1. 14 का 1. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. लाइपेज. लाइपेज कहाँ पे यूज होता है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में. पेक्टिन एंड प्रोटीनेजेस. क्लैरिफाइड बॉटल जूस. Cyclosporine A, it is an immunosuppressive agent, whereas streptokinase is modified by genetic engineering. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 1. Coming to the next question. Okay, again match the following. Cyclosporine A कौन प्रोड्यूस? This is very very important. This question is very very important. Cyclosporine A, it is Trichoderma polysperm. Streptokinase used as a clot buster. Statins used for blood cholesterol lowering agent, production of ethanol, saccharomyces cerevisiae. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 1. ठीक है. Coming to the next question again. Question number 17. This is also very very important, right? Asparagus niger. Asparagus niger क्या करेगा? Citric acid. ठीक है. Acidobacter aceti, acetic acid. Colostrum butadienum, butycalum, butyric acid and lactobacillus क्या है? Lactic acid, right? So ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 4. Coming to the next question. Streptokinase. Streptokinase, this is also very important. functions दे रख रहा है. Streptokinase क्या करेगा? Prevent heart attack. Pectinase, clear bottle juice. Pectinase, cleared bottle juice. Cyclosporine A, prevent graft rejection. And zymase, ethanol production. Zymase is an enzyme complex. ये क्या है? Zymase एक enzyme complex है जो yeast में produce रहता है. So there is. ठीक है. Saccharomyces में. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 2. Coming to the next question. Consider the following steps in sewage treatment. Filtration and sedimentation. ये step number 1 होगा. फिर क्या आएगा? फिर आएगा आपका एरेशन, एजिटेशन एरेशन टैंक. दिस इज स्टेप नंबर 2. देन एनारोबिक डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एरोबिकली. दिस इज 3. एंड उसके बाद एनारोबिक डाइजेशन. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3. ओके. Coming to the next question. Which of the following statements are correct? BOD level decrease after secondary treatment. This is correct. After primary treatment significant level decrease in BOD occurs. नहीं, BOD कहाँ पे होता है? secondary treatment के बाद ही BOD decrease होता है. So this is wrong. ठीक है. Dissolve oxygen level in primary effluent is higher. नहीं, BOD dissolve oxygen level primary effluent में BOD ज़्यादा है. BOD ज़्यादा होगा तो DO क्या हो जाएगा? DO कम हो जाएगा. So this is also wrong. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? Only 1 is correct. Okay. Now coming to the next question. Read the following statements and which of the following answer the following. ठीक है. The greater BOD of the wastewater, more is polluting potential. This is correct. A small part of activated sludge is pumped back to the aeration tank to serve as inoculum. This is also correct. Major part of the activated sludge is pumped back. Major part नहीं, small part होता है. ये correct wrong है. Carbon dioxide measure rate the uptake of carbon dioxide. BOD does not. BOD किसका है? measure है DO का. So ये वाले भी गलत है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन only 1 and 2 are correct.
Coming to the next question, Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan was initiated by Ministry of Environment and Forest. This is correct. Methanogens plays an important role in nutrition of cattle. This is also correct. Methanogens do not produce carbon dioxide. This is wrong. Methanogen क्या क्या produce करता है? Methane produce करता है, carbon dioxide produce करता है, ठीक है, hydrogen produce करता है. Correct, right? So this is wrong. So option is 1 and 2 only. Coming to the next question, again match the following. Filtration and sedimentation किधर पे जाएगा? Primary treatment में जाएगा. Flux कहाँ पे होगा? Flux is the association of fungi and bacteria during the sewage treatment. Activated sludge कहाँ से होता है? Activated sludge biological treatment में, and methanogen rumen of cattle. So option क्या हो जाएगा? Option हो जाएगा 2. Coming to the next question. Read the following statements and select the correct options. Flocks are masses of bacteria and fungi formed in the settling tank. Settling tank में नहीं होता है, ये aeration tank में form होता है. So ये वाला गलत है. Secondary treatment is also called biological treatment for sewage treatment plant. This is correct. तो option क्या हो जाएगा? Statement A is incorrect, but statement B is correct. Okay. Question number 25. BOD is the measure of organic matter present in the water. This is correct. The greater the BOD of the water, more is polymer. This is correct. So 25 का 1, both of them are correct. Okay, coming to the next. Aphids and caterpillar larvae are biocontrol. नहीं, aphids लोग को control करते हैं ना. Aphids and caterpillar larvae इनको control करना पड़ता है. These are not biocontrolling agent. This is wrong. Primary treatments involves filtration and sedimentation. This is correct. Secondary treatment involves aerobic digestion of dissolved organic waste. This is also correct. So option क्या हो जाएगा? Option only B and C. Okay, question number 27. Again, which of the following correct statements हमको निकालना है? In rumen, methanogen helps in breakdown of cellulose. This is correct. Right, the spent slurry in biogas is used as fertilizer. ये भी correct है. Microbes and like bacteria and fungi can be grown on nutritive media to form colonies which cannot be seen. Colonies form हो जाएगा तो वो तो naked eye से दिखेगा ही ना, वो naked eye से दिखेगा ही, तो ये वाला गलत है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1. Coming to the next question, read the following statements and which of the following are correct. ठीक है, the biogas consists of a concrete tank 10 to 15 deep, 10 to 15 meter deep. ठीक है ना, this is correct. Okay, technology of the biogas production was developed in ICR, Indian Council Agriculture Research नहीं, वो IA Indian Agriculture Research Institute and KVIC ने develop किया था. So this is wrong. The biogas plant has an outlet which is connected to the pipe to supply biogas to nearby houses. This is correct. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 and 3. Okay. Read the following statements and answer the question as follows. Bacteria BT is used to control butterfly caterpillars. This is correct. Fresh spores of BT, fresh spores नहीं होता है, dried spores हम लोग यूज करते हैं. So this is wrong. Insect larvae after beating they are killed by toxin. This is correct. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन only 1 and 3 are correct. Coming to the next question. The minority of the baculovirus, minority नहीं majority. The majority, तो majority of ये गलत है. न्यूक्लियोटाइड एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं, स्पीसीज स्पेसिफिक होगा तो वो क्या हो जाएगा? नैरो स्पेक्ट्रम हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो दे हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट. दिस इज करेक्ट. ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग. ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है. सो ड्रैगन फ्लाइज किसको खाएगा? मॉस्क्यूटो. लेडी बर्ड्स किसको खाएगा? एफिड्स, ठीक है, राइट. बेसिलस थ्रियोजेनेसिस, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एजोस्पाइरिलम. ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग है. ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग इन रूट्स, राइट. साइनोबैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर्स इन पैडी फील्ड्स. न्यूक्लोपॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है. स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम ग्लोमस फॉर्म्स माइकोरिजा, ठीक है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. वाइन, नो डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ. नो डिस्टिलेशन रम, डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ. ब्रीवर सीस्ट क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, बैक्यूलोवायरसेस अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 2. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग. एनाबिना नॉस्टॉक कहाँ पे मिलेगा? राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स में मिलेगा. ड्रैगन फ्लाई, मॉस्क्यूटो, लेडी बर्ड्स, एफिड्स, बैक्यूलोवायरस, स्किल स्पेसिफिक इंसेक्ट्स. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 2. क्वेश्चन नंबर 35. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बायो कंट्रोल मेथड ट्राई टू कम्प्लीटली
डिकेट कंप्लीट पेस्ट कंट्रोल नहीं होता है, वो पेस्ट लेवल को मैनेज करता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं, सो दिस स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, ठीक है। बायो कंट्रोल मेथड इज बेस्ड ऑन नेचुरल प्रेडिक्शन एंड पैरासिटिज्म, दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्री, स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। Coming to the next question, baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods. This is correct. Microbial biocontrol agents can be introduced to order to control butterfly, caterpillars, and bacteria, Bacillus thuringiensis. This is correct. So both these statements are correct. Biocontrol agent, biofertilizer similarity. Biocontrol and biofertilizer में क्या क्या similarity है? They are used in organic ferments. There is no chemical used. Use of bacteria and fungi in both method. This is correct. So ultimately all of them are करेक्ट। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट स्टेटमेंट निकालने को बोला है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगस आर मेन बायो कंट्रोल एजेंट्स। नहीं, साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया ये बायो फर्टिलाइजर है, तो ये वाला तो गलत है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इज द मोस्ट एडवांटेज बायो कंट्रोल, अगेन बायो कंट्रोल तो नहीं है, ये बायो फर्टिलाइजर है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द बायोफिल पेडिफिल्स साइनोबैक्टीरिया, इस साइनोबैक्टीरिया पेडिफिल्स में रहता है, सो 38 का 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38 का 4, that is only 3. Question number 39, which of them are correct? In peripheral, cyanobacteria serve as an important biofertilizer. This is correct. Plants having microbial associations so functions like tolerance to drought, salinity, and resistant to root-borne pathogens. This is correct. Correct है। baculoviruses are pathogens that attack the insect and other birds. This is correct. So all of these statements are correct. All of these statements are correct. Okay, coming to the next question, question number 40. Biocontrol methods and biofertilizers are part of organic farming. This is correct. Mycorrhiza mainly absorb phosphorus from soil. This is correct. The option, both of them are correct. Read the following statements. Streptokinase act as a clot buster and lipase is used in laundry formation. This is correct. Integrated pest management for ecologically sensitive area. This is also correct. Baculovirus is a biocontrol agent which do not kill animals, birds and fish. This is correct. Azotobacter and rhizobium fix nitrogen, correct है। Biogas plants have methanobacterium produce methane, hydrogen, carbon dioxide gas. This is correct. So all of them are correct. Okay. Again, question number 42. Lactic acid bacteria check disease causing microbes produce vitamin B12. This is correct. ठीक है। Fermented drink toddy obtained from fermentation of palm sap. This is correct. ठीक है। Whiskey, brandy are distilled and beer and wine are undistilled. This is correct. Ernest change hard for established solar anyway. This is correct. KVIC and I develop biogas plant. This is correct. So again, all of the options are correct. All of the options are correct. Okay. Coming to the next question, match the following है। Sewage treatment plant, best option matching, anaerobic sludge digester, biogas plant, methanogen, ठीक है। ट्राइकोडर्मा इज अ बायोकंट्रोल एजेंट, सैक्रोमाइसिस इज बेकर सिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स is produced by fungus? Okay, statins is produced by yeast, right? Cyclosporin A is produced by fungus. Okay, ethanol again produced by yeast. Methane produced by bacteria. Toxin for butterfly caterpillar, BT toxin, it is again produced by bacteria, ठीक है। इडली डोसा बैक्टीरिया चाहिए, ठीक है। स्विस चीज बैक्टीरिया, ठीक है। एसिडिक एसिड, अगेन एसिडिक एसिड इज फॉर्म बाय बैक्टीरिया। रॉकफोर्ट चीज बाय फंगस। तो यहाँ पे फंगस कितना किया, रॉकफोर्ट चीज इज फंगस, रॉकफोर्ट चीज फंगस, cyclosporin A fungus. So 2, 3, 4, 5. So there is no option correct. So fungus यहाँ पे 2, only 2 are produced from fungus. Okay. Coming to the next question, how many of the products is produced by bacteria? Again, streptokinase is bacteria. Citric acid is fungus. Beer, it is produced by yeast fermentation. Penicillin again fungus है। butyric acid bacteria, ठीक है। vitamin B12 lactic acid, this is again bacteria. Cyclosporin A is fungus. Toxin for butterfly larvae, bacteria. Lactic acid is again bacteria. तो कितना बैक्टीरिया हो गया, how many bacteria are there, 1, 2,
3 4 5, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, दैट इज 5। सो यहाँ तक हम लोगों का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खत्म होता है। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46 ऑनवर्ड्स इट इज इकोसिस्टम। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन इट्स एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, दिस इज करेक्ट। Correct है। Stratification refers to the vertical distribution of defined species in an ecosystem. This is correct. Shrubs occupy the bottom layer, नहीं, shrubs occupy the second layer, middle layer, तो ये वाला गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3, only A and B. All ponds in an ecosystem, though small, exhibits full functional aspects of the full scale ecosystem. This is correct. ठीक है। Bottom of a pond primarily harbors autotrophs, नहीं, bottom में कौन रहता है, decomposers रहता है, right? फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स, तो ये वाला गलत है। ठीक है। एबायोटिक फैक्टर से जस्ट सनलाइट, टेम्परेचर एंड वाटर रेगुलेट द इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी। 47 का 1, मैच द फॉलोइंग ट्रीज, टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा ऑफ द फॉरेस्ट, श्रब्स सेकेंड स्ट्रेटा, हर्ब्स थर्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 2, राइट, बी हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 1 एंड सी हो जाएगा 3, सी हो जाएगा 3, करेक्ट है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, again match the following. Stratification, stratification is vertical distribution of the species. Standing crop, standing crop क्या है, it is at the each trophic level certain mass of living material is present at a particular time which can be measured as biomass or the mass of living organisms. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, हाउ मेनी आर फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी फंक्शनल कंपोनेंट है, डिकम्पोजिशन फंक्शनल कंपोनेंट है, एनर्जी फ्लो फंक्शनल कंपोनेंट है, एंड अल्टीमेट और एक है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, दैट इज ऑल्सो फंक्शनल कंपोनेंट। देयर आर 4 फंक्शनल कंपोनेंट्स, राइट, 4। यहाँ पे 3 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1, करेक्ट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन बोला है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेट ऑफ biomass production by plants during photosynthesis, this is correct. Productivity is typically explained in units gram per meter square per year or kilocalorie per meter square per year, this is correct, right. Primary productivity is expressed in terms of energy only, नहीं, primary production energy only नहीं, ठीक है, राइट। प्राइमरी प्रोडक्शन बायोमास के हिसाब से भी रहता है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर में भी रहता है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हिच वन इज इनकरेक्ट, ओनली सी। ओके, it is NPP that is able to the next trophic level, this is correct. Secondary productivity is defined as rate of formation of new organic matter by consumers, this is also correct. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। ओके, 52 का 1। Coming to the next question, which of the followings are again correct है। Constant input of solar energy is basic given for any ecosystem function and sustain, this is correct. Net primary productivity is equal to gross primary productivity minus respiration, this is correct. Productivity is divided into gross primary productivity and net primary productivity, this is correct. NPP is available biomass for the consumption to all consumers, all consumers नहीं, it is partially incorrect because we only talk about, जब हम लोग NPP बोलते हैं ना, बेसिकली ये हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स के पास जाता है पहले, एंड देयर आफ्टर द फूड चेन देयर आफ्टर द फूड चेन स्टार्ट्स। तो टेक्निकली ऑप्शन डी इज रॉन्ग, right. Now gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis, this is correct. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। okay, how many of the statements are correct here, again how many of the statements are correct, or biosphere net annual NPP is approximately 170 billion tons, this is correct, of dry organic matter. Oceans, despite their vast, contribute to less total than terrestrial one, this is correct. Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem give its species composition, this is correct. Despite occupying 70% of the surface, productivity oceans only 55 billion tons, this is also correct. So how many of the statements are correct, all the 4 are correct. Coming to the next question, secondary productivity means rate at which molecular is used up, नहीं, secondary productivity क्या है, secondary productivity है जो consumers, rate of formation of new organic matter, rate of formation of new organic matter by whom, by consumers, तो ये वाला गलत है। Primary productivity depends upon the plant species in a particular area, this is correct. Primary productivity also depends on the availability of nutrients and photosynthesis, this is also correct. The component of the ecosystem does not include decomposition, functional component में ecosystem में decomposition आएगा ही आएगा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा, how many of the statements are correct, 2 statements. Coming to the next question, match the following. Productivity gram per meter square, primary production gram per meter square,
एनपीपी जीपीपी माइनस आर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 4. Coming to the next question. Okay, gross primary productivity again match करना है. Gross primary productivity is the rate of organic matter produced during photosynthesis. Net primary productivity is the energy left after respiration. Secondary productivity is the energy produced from the consumers, and productivity is the rate of biomass production. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2. Coming to the next question, match the following again. Detritus, dead remains of animals या फिर plants जो भी हो. Prime productivity depends upon the photosynthetic capacity of the filaments. This is correct. NPP available for biomass for the consumption to decomposers या फिर herbivores both of them are correct. ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1. क्वेश्चन नंबर 59. ह्यूमस इज हाईली प्रोन टू माइक्रोबियल एक्शन. नहीं, ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन. दिस इज रॉन्ग. बिलो द ग्राउंड डेटिटस नहीं. कंस्टिट्यूट्स लीफ लिटर ड्राइड, ये बिलो ग्राउंड नहीं है, ये अबव ग्राउंड रहता है. सिमिलरली ये वाला अबव ग्राउंड डेटिटस मेनली कंस्टिट्यूट डेड रोज है, अबव ग्राउंड नहीं, ये बिलो ग्राउंड है. सो 3 and 4 आर रॉन्ग. ठीक है, 3 and 4 आर 2 and 3 are wrong. ठीक है. Earthworms helps in loosening of the soil, right? This is correct. So option क्या हो जाएगा, which of the followings are incorrect? So 1, 2 and 3 are incorrect. 1, 2 and 3 are incorrect. Coming to the next question, decomposers or saprotrophs which feed on the dead bodies of the organisms. This is correct. Decomposition is a carbon dioxide requiring process. नहीं, ये oxygen requiring process है. This is wrong. Humus is a colloidal in nature and serves as a reservoir of nutrients. This is correct. Warm and moist environment slows down. नहीं, slows down नहीं, वो speed करता है decomposition. This is wrong. ठीक है. Humification mineralization occur during decomposition of the soil. This is correct. So how many of the statements are correct? Only 1, 3 and 5 are correct. Okay, read the following statements and how many statements are incorrect पूछा है. How many statements are incorrect? The factors affecting decomposition are chemical nature, detritus and climatic factors. This is correct. If the detritus is rich in lignin and chitin, decomposition is very fast. नहीं, वो slow होता है, slow हो जाता है. Decomposition is very slow if the detritus is rich in nitrogen. Rich in nitrogen तो वो क्या हो जाएगा, fast. So 2 and 3 are wrong. Detritus is a raw material for decomposition. This is correct. So how many of them are incorrect? Only 2 and 3 are incorrect. Question number 62. Precipitation correct निकालने को बोला है. Precipitation of the soluble inorganic matter in the soil horizon as unavailable salts is called mineralization. Mineralization नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं leaching, right? So this is wrong. Okay, decomposition breaks down complex organic matter into inorganic substances. This is correct. वाटर insoluble organic matters, वाटर insoluble होगा तो इसके साथ जाएगा नहीं, इसको क्या होना पड़ेगा, वाटर soluble होना पड़ेगा. सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. saprophyte bacteria and fungi secrete digestive enzymes over the fragmented detritus. This is correct. In fragmentation, detrivores break down detritus into smaller particles. This is also correct. So how many of the statements are correct? Only 2, 4 and 5 are correct. Coming to the next question, which of the following statements are incorrect? Again incorrect पूछा है. ठीक है. Fragmentation, leaching and catabolism occur simultaneously on detritus. This is correct. Accumulation of dark colored amorphous substances is called humification. This is also correct. ठीक है. Humus undergoes decomposition at an extremely slow rate. This is correct. ठीक है. Degradation of humus and release of organic nutrients in mineralization. नहीं, release क्या release करेगा, वो inorganic nutrients release करेगा. That is called mineralization. So this statement is wrong. Low temperature or anaerobic resistance building of organic matter. This is correct. So how many of them are incorrect? It is only 2. 4 is incorrect. Okay, coming to the next question. Match the following. Fragmentation क्या है? It is the breakdown of detritus into small particles. Leaching क्या है? Precipitation of water soluble nutrients as unavailable salts. And catabolism क्या है? Degradation of detritus by bacterial and fungal enzymes. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3. Coming to the next question, match the following. Again, detritus, it is the raw material for decomposition. Humification क्या है? Accumulation of the dark colored amorphous substance. Mineralization क्या है? Release of inorganic nutrients, right? And earthworm क्या है? Loosening of the soil. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 3. Coming to the next question, again match the following. Detritus rich in lignin, then decomposition would be slow.
detritus rich in nitrogen, decomposition very fast. Anaerosis, it inhibits decomposition, right? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा 3. Coming to the next question, match the following. Humus क्या है? Undergoes decomposition slow at an extremely slow rate. Leaching क्या है? It is the water soluble inorganic nutrients go down in the soil horizon. Mineralization क्या है? Mineralization, this is the further degradation of the humus. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा A is 3, right? B is 1 and C हो जाएगा आपका 2. C हो जाएगा आपका 2, right? Okay, coming to the next question, again match the following. Aquatic ecosystem में क्या है? Aquatic ecosystem grazing food chain is a major conduit of energy flow. Terrestrial ecosystem में क्या है? Detritus food chain is a major conduit of the energy flow. Warm and moist environment favors decomposition, whereas low temperature inhibits decomposition. The option हो जाएगा आपका, option हो जाएगा 2. Coming to the next question, question number 69. Okay, read the following statements and which of them are correct. Of the solar and incident solar radiation, more than 50%, more than 50% is less than 50% is R. So 1 is only wrong. Plants capture only 2 to 10% of the part. This is correct. All organs are dependent on food on the producers directly or indirectly. This is correct. So how many of the statements are correct? Only 2 and 3 are correct. Only 2 and 3 are correct. Okay, question number 70. How many statements are correct? How many of the statements are correct? In terrestrial ecosystem, terrestrial major producers are herbaceous and woody plants. This is correct. Energy for an ecosystem was the first and second of thermal is correct. No energy is trapped in an organism, remains forever in. This is correct. So all of them are correct. All of them are correct. Okay, read the following statements. Read the following statements. Transfer of energy from producers to top consumers through a series of organisms is called food chain. A food chain is always straight and proceeds in a progressive straight line. This is correct. In a food chain, there is unidirectional flow of energy from sun to producers, and after that series of different consumers. This is correct. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 71 का 4. 71 का 4. 72. How many of the statements are correct? ठीक है. In food chain, one organism can hold many positions at a specific time. Food chain, one organism cannot hold many positions. Food chain में, but they can occupy it in a food web. Food web में one organism can occupy multiple positions at a specific time. ठीक है. अच्छा, food chain for the flow of energy can be calculated. Yes, this is calculated. 10% loss से calculate हो सकता है. Food chain competition is limited to members of the same trophic level. Obviously फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल के मेंबर्स के बीच में ही कंपटीशन होगा, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज. तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ओनली 2 and 3 आर करेक्ट. Question number 73. Read the following statements about grazing food chain. Read the following statements about grazing food chain. So it starts with green plants called produce the first trophic level. This is correct. It is a major conduit for energy in an aquatic ecosystem. This is correct. Energy for grazing food chain comes from organic remains of detritus. Grazing food chain में नहीं, एनर्जी किधर से आता है? एनर्जी यहाँ पे detritus food chain से आता है. एनर्जी detritus food chain से आता है. करेक्ट है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 1. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 74. डेट्रिटस फूड चेन के लिए बोला है. इट बिगेन्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर. It begins with dead organic matter and decomposition called saprophytes as the first trophic level. This is correct. As much large fraction of energy through this type of food chain is terrestrial ecosystem. This is correct. Energy or detritus comes from the sun. Energy dead organic matter से आता है. So this is wrong. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? Only 1 and 2 is correct. Question number 75. Each organism occupies a specific place in the food chain known as their trophic level. This is correct. Birds, fish and wolf occupy the third trophic level. Bird, fish and wolf occupies the third trophic level. अगर आप एक ट्रॉफिक लेवल बनाओ जैसे प्रोड्यूसर, उसके बाद क्या होगा?
प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद क्या होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद क्या होगा टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड एंड टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ। तो बर्ड, फिश एंड वुल्फ, राइट, बर्ड, फिश एंड वुल्फ सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, हार्बीवोर ही होगा, करेक्ट है। सो दिस इज करेक्ट, right? So the standing crop is measured as the mass of the living organisms or the number in a unit area. This is correct, ठीक है। Zooplanktons that feed on phytoplankton is a primary consumer. This is also correct. The number of trophic levels is grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. This is correct. So all of them are correct. Coming to the next question, again same, आप एक food chain बना लो, ठीक है ना। सो आप एक फूड चेन बना लो, प्रोड्यूसर, राइट, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड एंड टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर गोट एंड जू प्लैंक्टॉन्स, राइट, हार्बीवोर्स है। प्रोड्यूसर ग्रास एंड ट्रीज है, ठीक है। टर्शियरी कंज्यूमर टॉप कार्निवोर होगा एंड सेकेंडरी कंज्यूमर कहाँ पे रहेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, again match the following. Detritus food chain begins with the dead organic matter, grazing food chain begins with producer, traffic level, specific place in a food chain. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, ट्रॉफिक लेवल, अगेन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आपको लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन मिल जाएगा, वल्चर, ठीक है ना, ये टर्शियरी कंज्यूमर रहता है, ठीक है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आपको रैबिट मिल जाएगा विच इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ग्रास मिल जाएगा विच इज़ अ प्रोड्यूसर एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्रो मिल जाएगा विच इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। ओके, coming to the next question, species composition, identification and enumeration of plant and animal species, species composition, identification and enumeration of plant and animal species. Detritus rich in sugar, rate of decomposition is fast, rate of decomposition is fast. Trophic level represents a function level, trophic level represents a functional level. So option क्या हो जाएगा 4, 79 का 4। Question number 80, match the following. Biomass expressed in terms of fresh or dry weight, 10% law, flow of energy from one trophic level to the other, 2 to 10% of the per amount of energy captured by the plants। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। Question, detritus food chain begins with detritus because decompositions like fungi and bacteria are major decompositions in such food chain. So both the statements are correct, both the statements are correct and this is partially explaining it, ठीक है, ये partially explaining है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन 1 दे देंगे। detritus food chain begins with the detritus, ठीक है, because बेसिकली डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही एनर्जी होता है। तो detritus food chain को कौन, detritus food chain में मेरे को क्या क्या मिल जाएगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो पार्शियली इट इज करेक्ट, सो आंसर 1 दे सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, right, less than 50% is photosynthetic active radiation. This is correct. Ecosystems need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counter the universal tendency toward increasing disorderliness. This is also correct. This is the second law of thermodynamics, right? So both the statements are correct. Now pyramid of biomass shows decrease in the biomass at higher trophic level. This is correct with the exception किसमें होगा, exception होगा aquatic ecosystem में pyramid of biomass क्या है, inverted है। So यहाँ पे since best यहाँ पे options में choose करना है, तो ये वाला according to the options is correct. Any calculation of energy content biomass or numbers has to include all the organisms at trophic level. This is correct. An organism occupies only one trophic level in the same ecosystem at the same time. नहीं, they can occupy more than one. Only one नहीं correct होता है, more than one हो सकता है, they can occupy more than one. So this is wrong. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। Coming to the next question, question number 84. A sparrow can be a primary consumer if it eats seeds and fruit, and a secondary consumer when it eats insects and worms. This is correct.
एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन द हायर. यस, बेस में एनर्जी ज़्यादा होता है और जितना ऊपर में जाता है उतना रिड्यूस हो जाता है. द pyramid of biomass in sea is generally inverted because the biomass of fish far exceeds that of phytoplankton. This is correct. So all of them are correct. Question number 85. Question number 85. In most of the ecosystem, producers are less in number and biomass than herbivores. This is wrong. ठीक है, right? Biomass producers का ज़्यादा होगा. Pyramid of number in is upright in a tree ecosystem. Pyramid of number इन्वर्टेड है. पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड है क्योंकि एक ट्री के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ इंसेक्ट हो सकते हैं, है ना, 100 ऑफ इंसेक्ट हो सकते हैं, वो इन्वर्टेड होता है, तो ये वाला गलत है. द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन लेवल नॉट अ स्पीशीज लेवल. दिस इज करेक्ट, राइट. तो हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट कौन है? 1 and 2 आर इनकरेक्ट. Okay, match the following. Pyramid of biomass, it is inverted in the sea. Pyramid of number, it is upright in the grassland ecosystem. Pyramid of energy can never be inverted and base of the pyramid represents the producers. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 2. ऑप्शन इज 2. Coming to the next question, match the following. Ecological pyramid does not accommodate a food web. This is इसका क्या है? इसका ड्रॉबैक है. Pyramid of energy, some energy is always lost as heat and each step. Sparrow is a primary consumer. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4. Question number 88. Pyramid of number ट्री इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करता है. इकोलॉजिकल पिरामिड, सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी स्पेस, राइट. अगेन अ ड्रॉबैक. फूड वेव, नेचुरल इंटरकनेक्शंस ऑफ द फूड चेन. ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3. क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड of biomass is generally C because biomass of fish far exceeds that of phytoplankton. Both of them are correct and the reason is the correct explanation for the assertion. Pyramid of biomass is always upright in tree ecosystem. This is correct. Tree का weight हमेशा ज़्यादा होता है. Total biomass of a tree in a specific area is less than the herbivore. अगर tree का biomass herbivore से कम होता है तो वो ecosystem destabilize हो जाएगा. तो the reason is false. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? assertion is true but reason is false. ठीक है, तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर आपका रिवीजन टेस्ट, राइट. मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू.